client as its agent and requests to client that buy the specific commodity uh, that clients want to purchase, that he visit the supplier and buy that commodity on behalf of bank. The Islamic Bank initially appoint client as an its agent. When the client becomes agent, no more client. He will be considered as agent. And the agent will buy the commodity from the supplier in capacity of agent. And you know that agent is not owner. Who is owner? Principal. And who is principal? Islamic Bank. So if client buy the commodity from the supplier in the capacity of agent of Islamic Bank and takes the possession on the good, it will be considered that Islamic Bank has took the possession. So the possession of agent will be considered constructive possession of the principal Islamic Bank. अगर इस्लामिक बैंक को वो अपना इस्लामिक बैंक क्लाइंट को अपना एजेंट बना देता है कि जाओ भाई, आपको जो गाड़ी चाहिए, जिस कलर की चाहिए, जिस क्वालिटी की चाहिए, फलां सप्लायर के पास चले जाओ, जो गाड़ी तुम खरीदना चाहते हो, हमारे वकील की हैसियत से, एजेंट की हैसियत से तुम वो गाड़ी मार्केट से जाकर खरीद लो फलां सप्लायर से. अब वाई दे आर अपॉइंटिंग क्लाइंट एज इट्स एजेंट, उसकी रीजन है. वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि भाई क्लाइंट को ज्यादा बेहतर पता है कि वो कौन सी गाड़ी ले. It was also possibility that Islamic Bank send its own management team, its own person to bring the car or to buy the commodity which the client has ordered. ये भी possible था, but there was also an probability that the customer may refuse, may dislike, and it is quite possible he refused to accept that commodity. And he says that, no, I ordered different thing, this is a different thing. मैंने कुछ कहा था, आप क्या लेके आ गए हो? तो to secure Islamic Bank itself from such a moment, then it is Sharia scholars allow Islamic Bank to appoint agent client as its agent. आप अपना क्लाइंट को एजेंट बना दें, क्लाइंट को ज्यादा बेहतर पता है कि उसने क्या चीज खरीदनी है, तो जो अपनी पसंद की वो चीज खरीद के लाएगा, इस्लामिक बैंक के हवाले कर देगा. This is the important point, that when the client purchases the goods as an agent, then client is not allowed to use that commodity before handing it over to the Islamic Bank. वो उसको यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी एजेंट है. और यूज करने के लिए जरूरी है कि यू मस्ट बी ऑथराइज्ड और यू मस्ट बी ओनर ऑफ द कमोडिटी. तो जब क्लाइंट सप्लायर से गाड़ी परचेज करता है या कोई भी चीज परचेज करता है, तो इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट परचेज कर रहा होता है, और ओनर कौन है? इस्लामिक बैंक. If there is an earthquake, if there is a tsunami and the asset is destroyed, if there is a terrorist attack and the asset is destroyed, who will be considered the responsible of the loss? Then it is known that because the vehicle was under the ownership of Islamic Bank, so that is why Islamic Bank will bear the loss. But in conventional sector, who will bear the loss? Client will bear the loss. Though he was agent, but its conventional sector says that no, it does not matter for a conventional sector. They say that we have issued 20 lakh rupee. The loss, though the loss has been emerged in case of tsunami, in case of earthquake, they say we don't care, we have our money, so just pay us back. तो कन्वेंशनल सेक्टर जो है वो नहीं छोड़ता और कहता है कि जी हमें हमारा पैसा चाहिए. इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, इस्लामिक फाइनेंस के अंदर ये नहीं हो सकता, बिकॉज इस्लामिक बैंक वाज द ओनर, तो इस्लामिक बैंक विल बी एट द लॉस. Acquiring possession stage. Client will purchase required goods on bank behalf. There are three possible forms.
In case of advance payment to supplier, discount from supplier, if any, would be passed on to the customer at the time of Murabahah sale by reducing the cost of sales. As we discussed, कि अगर उसको कोई discount मिलता है, तो that must be passed on. If there is a rise in price at the extent that it exceeds the Murabahah facility amount, यानी कि अगर उसको कहा गया था कि भी हम आपको 20 लाख तक का फाइनेंस करेंगे और बाद में पता चला कि चीज तो 25 लाख की निकली है, then the transaction can only be executed if the bank has been informed and the bank subsequently accept the same. बाद में बैंक मैनेजर को बताया गया कि जनाब इस बंदे को हमने लिमिट सैंक्शन की थी, that was equal to 20 lakh, but the commodity, the prices has been increased. Now the commodity's worth is 25 lakh rupee. So whether we will give the commodity on murabaha basis to this client, तो वो कहते हैं कि if Islamic bank management gives the consent to sell that commodity and for 25 lakh rupee, then it is allowed to give the commodity. लेकिन अगर बैंक का मैनेजमेंट कहते हैं नहीं 25 लाख ज्यादा है, ऐसे क्लाइंट्स को नहीं दे सकते हम, तो वो नहीं मिलेगा. The third is the change of commodity in agency agreement can be done with a mutual consent. Supplier visited the client as an agent, in capacity of agent, visited the supplier, and he during his visit he liked another commodity. Now he changed his mind that he is not going to buy the commodity he desired in the beginning. Now he wants to switch the product. So the Sharia says that this point says that the asset can be switched, asset can be changed with the mutual consent. Then he will inform the principal Islamic bank and gets the consent that now he is going to buy some other commodity. Islamic bank उसको इजाजत देता है तो वो ये change of asset कर सकता है. Bank must take actual and constructive possession on subject matter. Actual possession की mean कि अपने पास कोई चीज वो हवाले करके इस्लामिक बैंक के मैनेजमेंट ले ले, ये होगी एक्चुअल पोजेशन, कब्जे में ले लेना. इस्लामिक बैंक का मैनेजर बाकायदा कब्जे में ले ले. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इज नोन एज हुक्मी कब्जा. डॉक्यूमेंट्स इस्लामिक बैंक के मैनेजर के पास आ गए तो इट इज दो के फिजिकल गाड़ी बाद में आएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की ओनरशिप आ गई है तो हम कहेंगे इट इज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. तो जो वकील की एजेंट की पोजीशन होती है, एजेंट की रियल पोजीशन प्रिंसिपल की कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होती है. ये याद रखें प्रिंसिपल सारे लोग. हाँ, क्या कहा मैंने जुनैद? सर रिपीट कर दें. एजेंट की रियल पोजीशन एजेंट की रियल पोजीशन प्रिंसिपल की कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होती है, हुक्मी कब्जा होता है उसका. तो किसी भी चीज को आगे सेल करने के लिए जरूरी है कि या तो आपकी सेलर की कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो या उसकी रियल पोजीशन हो. अगर उसकी रियल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन दोनों नहीं है या कोई एक भी नहीं है, then he is not allowed to sell it further. इसलिए कब्जा जरूरी होता है. So as client mean the agent takes possession of subject matter on the behalf of bank. All types of risks, price risk or damage risk will be transferred to the bank from supplier. Client purchases goods and takes possession. Look at here. Now the ownership will be transferred from supplier to the bank. खरीद कौन रहा है? Client, but he is agent of Islamic bank. जैसे ही वो खरीदेगा तो सारे रिस्क ट्रांसफर हो जाएंगे सप्लायर से बैंक को, बिकॉज रिस्क इज एसोसिएटेड विद ओनरशिप. रिस्क उसी का होगा जिसकी ओनरशिप होगी.